Hello everyone, this is Farhan. Guys, I'm solving the specimen paper of paper 4, alternative to practical for the examination from 2023. All right, let's see what we have in this paper. That's a specimen paper. Liquid Q is a fraction from petroleum containing large alkene molecule. तो एक बात तो कंफर्म हो गई यहाँ पर कि ये जो लिक्विड क्यू है ये बेसिकली आपका हाइड्रोकार्बन है. ओके, क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो माइट बी लिक्विड क्यू इज अ हाइड्रोकार्बन because it is extracting from or it is obtaining from petroleum product. Shows the apparatus used to crack liquid Q, that is cracking the process. And we did this in class with the same diagram, guys. The vapor from liquid Q is passed over heated aluminum oxide. Why are we using heated aluminum oxide? Heated aluminum oxide के दो functions हैं यहाँ पर. पहला, to remove water. ठीक है, that is dehydrating agent. And दूसरा, acts as a catalyst. That is to speed up the reaction. Okay. To produce a mixture of hydrocarbon that includes alkenes. और आप जानते हैं कि alkene is the class of compound जिसमें double bond होता है between the carbonate. Okay. ये diagram उन्होंने दी हुई है हमें. Identify the two pieces of apparatus by completing the boxes in figure 1.1. ये आपका retort stand है जिसको आप iron stand भी कहते हैं. आयरन स्टैंड और रिटॉर्ट स्टैंड. मैंने रिटॉर्ट लिखा है आपको, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर में. और ये आपकी ऑब्वियसली बॉइलिंग ट्यूब भी कह सकते हो आप इसको, टेस्ट ट्यूब भी कह सकते हो. बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब. ओके, तो कह रहे हैं स्टेट द पर्पस ऑफ द मिनरल वूल. हाँ जी, ये मिनरल वूल है. सो मिनरल वूल जो है वो किस फंक्शन के लिए काम आता है? मिनरल वूल is used to soak the liquid. Soaking up of the liquid के लिए यूज होता है. ठीक है, soak up the liquid. तो अगर इसी को मैं कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं to absorb liquid Q. ठीक है, give a test and the results that shows the presence of an alkene. Test. Aqueous bromine reacts with alkene. Result, aqueous bromine decolorizes, that is orange to colorless. Orange जिसको हम red brown भी कहते हैं times. Orange to colorless. मैंने कहा था ये ऑब्जर्वेशन देना, decolorizes की टर्मिनोलॉजी मत लिखना. ठीक है,
State why the delivery tube must be removed from the water when the heating stops to prevent sucking back of water. The whole question we have done in the class, okay? To prevent sucking back of water into the tube. क्योंकि ट्यूब हीटेड होती है, बस्ट हो जाएगी into the tube. Okay, that was the question number 1. Let's start with question number 2. Student investigate the reaction between aqueous sodium carbonate and two different solution of dilute hydrochloric acid labeled solution A and B. इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये भी आपके पास HCl का solution होगा और ये भी आपके पास HCl का solution होगा, and obviously इन दोनों की concentration में फर्क होगा. Concentration might be different. अगर solution same है तो जाहिर सी बात है concentration same नहीं होगी. The solution concentration might be different. Okay, ये याद रखिएगा. ये रिएक्शन किया है हमने कि जिसमें सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एफिवेसेंस रिलीज होंगे यहाँ से. Effervescence is given off. Okay, कह रहे हैं the students follows the instructions for 3 experiments. तो हम सबसे पहले बात करते हैं experiment number 1. Use a volumetric pipette to add 25 cm cube of aqueous sodium carbonate to the conical flask. A thermolphthalene indicator, ये न्यू इंडिकेटर ऐड हुआ है, मैंने आपको करवाया है, याद है आपको? thermolphthalene indicator. फिर उसके बाद है fill a burette with solution A. इसका मतलब ये हुआ कि ये HCl का solution जो है वो burette के अंदर है, जबकि सोडियम कार्बोनेट का solution conical flask में है. ठीक है, record the initial burette reading at solution A from the burette until solution turns colorless. Record the final burette reading. Okay, shows the students results. Calculate the initial burette reading for experiment 1 and record it in the table. So initial burette reading obviously 0.00 होगी, तो difference आ जाएगा 13.2 का. Okay, okay जी. अब इशू है एक और इशू ये है कि हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट देखने, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमें ये देखना है कि परफॉर्म किस तरह से करना है. लेकिन एक चीज और, थाइमोल्थैलीन का जो इंडिकेटर है, एसिड में कलर क्या होगा इसका? थाइमोल्थैलीन का एसिड के अंदर कलर क्या होता है? आई थिंक कलरलेस. और एल्कली के अंदर होता है ब्लू. राइट, यही करवाया हमने आपको. ठीक है, ओके. सो इसका मतलब जब ऑब्जर्वेशन होगी ना इसकी, तो ब्लू टू कलरलेस होगा, बिकॉज सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होता है वो एल्कलाइन होता है, तो एल्कलाइन में ब्लू होगा, एसिड के अंदर कलरलेस हो जाएगा. सो आप लिख सकते हैं फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस. ओके, आई थॉट आई शुड रिमाइंड यू क्या है. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट 2. Hold on a second. Experiment 2.
Empty the conical flask and rinse it with distilled water. Repeat the method in experiment 1 with methyl orange indicator instead of thymolphthalene indicator. भाई अगर आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस इंडिकेटर का एसिड के अंदर कलर क्या होता है, रेड, और एल्कली के अंदर क्या होता है, येलो। सही है। तो कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट which has an alkaline solution, so that gives you yellow color initially. तो येलो टू रेड होगा, ऑब्जर्वेशन फाइनल। ठीक है। इस केस में shows the initial and final bureau readings for experiment 2. इनिशियल ब्यूरो रीडिंग है आपके पास 5, 6, 7, 8, 12.8। सो ये हो जाएगा आपके पास 12.8। ठीक है। और आपके पास फाइनल ब्यूरो रीडिंग क्या होगी भाई, फाइनल ब्यूरो रीडिंग है 39.2। ओके, 39.2। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं 39.2 माइनस 12.8, so it's going to be 26.4. okay, चलिए उसने खुद भी कह दिया कि methyl orange indicator is red orange in acid solution and yellow in alkaline solution. State the color change observed in the conical flask. The conical flask में sodium carbonate है, sodium carbonate has an alkaline solution. alkaline solution के अंदर उसका कलर होगा येलो और ऑब्वियसली रेड होगा। यही ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर भी दी थी आपको, वही उठा के लिख दिया हमने। ठीक है। Suggest one observation other than color change that is made when dilute hydrochloric acid reacts with aqueous sodium carbonate in experiment 2. तो आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर जब आप एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जिसके एफरवेसेंस मिलेंगे आपको। ठीक है। सो हम यहाँ लिख देते हैं effervescence of a gas is given off, okay, all right. Experiment 3, empty the conical flask and rinse it with distilled water. Empty the burette. Repeat the method in experiment 1 with solution B instead of solution A. Use indicator. Thymolphthalene indicator works like that, different video. ठीक है। ये इनिशियल ब्यूरो रीडिंग है, ये फाइनल है और ये डिफरेंस आ गया हमारे पास। कंप्लीट द सेंटेंस। एक्सपेरिमेंट डैश यूजेस द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर। भाई सबसे इसका डिफरेंस कितना है भाई, लेट मी टेल यू कि यहाँ है 13.2 का डिफरेंस, यहाँ है 26.4 और यहाँ है 6.6। तो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर आया है। Experiment 2 uses the largest volume of dilute sulfuric hydrochloric acid to change the color. सही है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो इस एक्सपेरिमेंट 2 ने यूज किया है। State the effect on the volume of solution B used in experiment 3 if the aqueous sodium carbonate is warm before adding solution B. Guys, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली देखो। इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन B क्या है in experiment 3? If the sodium carbonate is warm before adding solution B, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को वार्म करूं और फिर सॉल्यूशन भी ऐड करूं तो कोई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी का कोई इफेक्ट होगा? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इफेक्ट होगा। आई डोंट थिंक सो, नो इफेक्ट। क्यों नहीं होगा इफेक्ट? क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट 3 में सॉल्यूशन बी की जो कंसंट्रेशन है वो तो चेंज ही नहीं हो रही। सो कंसंट्रेशन
of solution B remains same in experiment 3. Okay. Next, calculate the simplest whole number ratio of volume of solution A used in experiment 1, volume of solution B used in experiment 3. तो solution A experiment 1 कितना है 13.2. Oh my goodness. Okay. ये मेरे पास experiment 1 है 13.2 और फिर रेशियो किसका कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट 3 का और एक्सपेरिमेंट 3 क्या है मेरे पास ओ माय गुडनेस 6.6 so 13.2 divided by 6.6 is going to be 2. तो अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालना चाहते हैं तो इसको भी 6.6 से डिवाइड कर दें, इसको भी 6.6 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1. तो रेशियो 2:1 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द simplest whole number ratio of the concentration of solution A, concentration of solution B. भाई अगर इसका ट्वाइस वॉल्यूम है इससे तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन हाफ होगी इससे. ठीक है. तो कंसंट्रेशन रेशियो must be 1:2. सही है. बात समझ में आ रही है. अगर यहाँ ट्वाइस वॉल्यूम यूज हुआ है इससे तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी हाफ इससे. ठीक है. यानी वॉल्यूम ट्वाइस है तो कंसंट्रेशन क्या होगी हाफ और वॉल्यूम हाफ है तो कंसंट्रेशन क्या होगी ट्वाइस. फ्लिप कर दीजिए एक तरह से. ठीक है. The burette is emptied and reused in experiment 3. Okay. Suggest an additional step after emptying the burette which would improve the accuracy of the result. In order to improve the accuracy, we need to repeat the experiment. All right, मैंने पहले भी कहा और I have to repeat the experiment. लेकिन उससे पहले उसने कहा कि additional step after emptying the burette. तो भाई rinsing करूँगा. हम ये लिखेंगे rinsing needs to be done after emptying the burette. सही है. और जाहिर सी बात है एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट 3. तो एक्सपेरिमेंट 3 में हमने क्या यूज किया था. हमने एक्सपेरिमेंट 3 में सॉल्यूशन बी यूज किया था. राइट. सो हम यहाँ लिखेंगे रिंसिंग बल्कि इसको इस तरह से लिख लो रिंसिंग with B needs to be done after emptying the burette. Okay. Titrations often give inaccurate results is done only once. ठीक है. जब एक मर्तबा करते हैं तो वो गलत होता है. वो कह रहे हैं suggest how repeating each experiment several times produces more accurate values. यार more accurate values मैंने पहले भी कहा है उस वक्त आती हैं जब एक्सपेरिमेंट रिलायबल हो. और रिलायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है रिलायबल वैल्यूज पे. और रिलायबल वैल्यूज आपके पास उस वक्त आती हैं जब आपके पास कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हों. राइट. और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स उस वक्त आते हैं जब आप उनको रिपीट करें एक्सपेरिमेंट्स पे. राइट.
सो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहला रिपीट experiment to get the consistent values. अच्छा, और जब कंसिस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर टाइट्रेशन में करेंगे क्या, उन वैल्यूज का मीन लेंगे एंड टेक, क्योंकि टाइट्रेशन में हमेशा मीन लेते हैं ना बेटा, एंड टेक आउट दी मीन वैल्यू। ठीक है, that's the end of question number 2. Let's move on to the next question, that is question number 3. A student tests two solids, solid C and solid D. Test on solid C. हम टेस्ट 1 में हीट कर रहे हैं। ओ, हीट करने से पहले एक और चीज, अपीयरेंस ग्रीन सॉलिड, इसका मतलब इट माइट बी आइदर आयरन और क्रोमियम सॉल्ट, क्योंकि ये दोनों ग्रीन होते हैं। ठीक है, आइदर आयरन या फिर क्रोमियम सॉल्ट। लेट्स सी व्हाट वी हैव। वो कह रहा है अगर मैं हीट करूंगा सॉलिड टर्न्स ब्लैक। ओह माय गुडनेस, एंड दिस शोस कि ये कॉपर भी हो सकता है। उसकी रीजन दूंगा मैं आपको। अच्छा चले मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ। ग्रीन सॉलिड कॉपर कार्बोनेट का भी हो सकता है, ग्रीन सॉलिड FeSO4 का भी हो सकता है, और ग्रीन सॉलिड क्रोमियम सल्फेट का भी हो सकता है। अब बात समझ में आई क्यों लिखा था मैंने कॉपर क्रोमियम आयरन। ओके, और ये वो कह रहा है कि ये ब्लैक हो गया है, तो ब्लैक जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड होता है, तो कंफर्मेशन हो गई कि भाई ये कॉपर कार्बोनेट होगा सॉलिड सी। ठीक है, एनी हाउ आगे चलते हैं। तो कंफर्मेशन तो मैंने यही कर दी है, लेकिन हम फिर भी आगे चलते हैं। हम एक्चुअली अब डिस्कशन करेंगे इस बात के ऊपर कि अगर हम उसको हीट कर रहे हैं और हीट करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, तो रैपिड एफिबेसेंस है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दैट शोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, and that shows कि carbonate ions available। ओके, फिर उसके बाद आपके पास है, to the solution produced in test 2 at aqueous ammonia dropwise and then in excess light blue precipitate forms which dissolves to form a dark blue solution that confirms the presence of copper ions। तो आपके पास दो चीजें हो गई, एक कॉपर आयन एक कार्बोनेट आयन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कॉपर कार्बोनेट। तो मैंने तो कंफर्म यहाँ पर कर दिया था कि ये कॉपर कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वो कर रहे हैं, सजेस्ट व्हाई इट इज नेसेसरी टू हीट जेंटली एट फर्स्ट। एट फर्स्ट वी नीड टू हीट इट जेंटली सो दैट जो ट्यूब है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ब्रेक ना हो। दूसरी ये भी रीजन लिख सकते हैं कि जो सॉलिड है आपके पास, अगर आपको बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो उस ट्यूब से बाहर निकल कर गिर जाएगा, राइट। तो दोनों में से कोई भी एक रीजन लिख के दे सकते हैं, दोनों ठीक है तीन जगहों पे, तो हम रीजन लिख के दे सकते हैं। एट फर्स्ट heat it gently to avoid any solid coming out from the tube. Also, on strong heating, tube might crack. ठीक है, describe how would use lime water to test the gas in test tube। मैं लूंगा 4
some amount of lime water in a test tube. By using फिर लिखेंगे pass the gas via delivery tube pass the gas via delivery tube into a lime water. This makes it cloudy. Okay. Identify the gas, carbon dioxide. Formula नहीं लिख सकते क्योंकि वो आपसे formula मांग नहीं रहे. Identify a solid C, that is copper carbonate. तो आप formula भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है, नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा copper 2 carbonate. Okay. Test on solid D. Okay. Test on solid D. Solid D is potassium iodide. और याद रखिएगा पोटेशियम. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. The student makes an aqueous solution D using solid D and divides into two parts. ठीक है, सॉलिड का उसका सोल्यूशन बनाया, फिर सोल्यूशन का जो पहला पोर्शन है उसमें स्टूडेंट ने ऐड किया है एक्सेस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. कंप्लीट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन. और भाई कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, नो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि पोटेशियम आयन का कोई टेस्ट नहीं होता. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना आयोडाइड से रिएक्शन करता है ना पोटेशियम आयन से. ऐसी कोई रिएक्शन हमने करवाई नहीं है. The student tests the second portion of solution D to show the presence of iodide ion. Yes, we did this. Iodide ion की presence को check करने के लिए at dilute nitric acid followed by silver nitrate. तो रिजल्ट्स क्या होगा? येलो प्रेसिपिटेट्स. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट डज अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड डी, कंप्लीट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन. आपको याद है मैंने आपको पीरियोडिक टेबल कराया था और मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पोटेशियम बर्न विद लाइलैक फ्लेम याद होने चाहिए बहुत अच्छे से हर चीज. सो मैं यहाँ लिखूंगा लाइलैक फ्लेम फॉर पोटेशियम. सही है. फ्लेम कलर मेटल्स के होते हैं, नॉन मेटल्स के नहीं होते. Describe how to do a flame test. So मैं एक spatula लूंगा. Take a spatula, right? Clean this spatula. All right. Spatula को clean करने के बाद place solid potassium iodide on it. उसके बाद put this spatula into a hot flame. Yeah, into a flame. Thus, lilac flame for potassium is observed.
क्योंकि मैंने पोटेशियम के कॉन्टेक्स्ट से बात करी, आप चाहें तो जर्नल भी लिख सकते हैं, 10 फ्लेम कलर इज ऑब्जर्व, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से बात करी है, ठीक है, तो लिख दिया। बल्कि 10 फ्लेम कलर जर्नली लिख लीजिए, 10 फ्लेम कलर इज ऑब्जर्व। अच्छा, जरूरी नहीं है आप सॉलिड लेकर ही काम करें, आप सोल्यूशन लेकर भी फ्लेम कलर कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेम को टेस्ट कर सकते हैं। Let's move on to the next question. That is question number 4. Plant leaves contain a mixture of colored substances. Plan an experiment to find the RF values of the colored substances present in plant leaves. Okay, I need to find out the RF values of the colored substances via plant leaves. Your plan should describe the use of the common laboratory aptitudes, plant leaves, and ethanol as a solvent and absorbent paper. You may draw a diagram to help. अच्छा, वो कह रहे हैं you may draw, यानी you don't need to. If you want, you can. If you don't want, you cannot. ठीक है, आपकी मर्जी है अगर आप उसको बनाना चाहते हैं। अगर आपको एक बात तो तय हो गई है कि RF की वैल्यू आप डिटरमिन करना चाहते हैं, और RF की वैल्यू हमेशा क्रोमेटोग्राफी से डिटरमिन होगी। इसका मतलब मैं क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज करूंगा। तो मैं, मेरे पास डायग्राम और लिखने की जगह दोनों है, तो मैं पहले लिख के दे देता हूँ आपको कि कैसे करते हैं क्रोमेटोग्राफी, और ये मैंने पूरा लिखवाया है आपको, पूरा प्रोसीजर लिखवाया है। चलें हम भी लिखते हैं, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है, तो मैं उसको यूज करूंगा। सो मैंने यहाँ लिखना है कि क्रोमेटोग्राफी इज यूज chromatography is used to find chromatography is used to find the RF value of colored substances, present in leaves. Okay, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि मैं जो leaves हैं उनको पेस्टल और मॉड, ओके, ओके, और मेरे पास सरप्राइजिंगली सैंड भी है और इथेनॉल भी है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसको लिखना पड़ेगा। सो बाय यूजिंग mortar and pestle, crush the leaves, um, place them in sand and ethanol solvent. Okay, leave for a short time, leave the mixture for a short time, then filter the liquid.
सैंड रह जाएगी और जो सोल्यूशन होगा वो आपको कलेक्ट हो जाएगा, लिक्विड या मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, draw a sharp line, sharp reference line in the bottom of chromatography paper from pencil. Okay, next क्या होगा, the mixture to be analyzed is spotted on it. उसके बाद place the chromatographic paper in a solvent which needs to be below the spots. Okay, फिर आप क्या लिखेंगे, solvent travel against the gravity through capillary action and capillary action is a process जिसमें adhesive और cohesive forces दोनों exist कर रही होती हैं traveling के लिए किसी भी liquid की, capillary action। ठीक है, once the process is finished, find the distance traveled by solvent. Find the distance traveled by solvent using solvent front line. And distance traveled by solute to get the RF value. Okay. Now from this whole question, मुझे एक चीज क्लियर हो गई है कि जो हमने आपको प्रोसेसेस वगैरह लिखवाए हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में या जो डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, you need to prepare entire content to the in order to ace your ATP paper in your Cambridge examination. Let's see what we have in the next question. Oh, that's the end of the paper. That's only 4 questions. इससे पहले 6-7 कर रहे थे हम. So only 4 questions, but obviously थोड़े से technical हैं, थोड़े से analytical होंगे. All right. Thank you very much, guys. अपना ख्याल रखिए.